Good morning to all of you. This is chapter number 7, coordinate geometry in our syllabus. We have already discussed chapter in the class 9. In class 9, we have studied about the coordinates, axis, and the abscissa ordinate of the location of the point. But in the class 10, we have discussed the how to find the distance between two given points, how can we calculate the collinearity or the area of triangle, and the section formula. इन दिस सिलेबस द सब्जेक्ट सेशन हम लोगों के जो सिलेबस में है कार्टेशियन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट द डिस्टेंस फार्मूला third one is area of triangle, the collinearity of 3 points in the section formula, and special points of the triangle like median, orthocenter, incenter, etc. What is the distance? As we know that in the Pythagoras theorem, if in a triangle is given is to right triangle, so square of the hypotenuse is equals to square of sum of the squares of other two sides. On the similar way, we are going to calculate the distance formula. These are the coordinate axis, y-axis and the x-axis. This is called x-axis or y-axis. Both are intersect each other at point origin. Suppose we have taken the 2 points P and Q. The coordinates of the P and Q are x1, y1 and x2, y2. On we have to calculate the distance between both the points. How can we calculate distance between both the points? First, we have to drop the perpendicular from the both points on the corresponding axis. जैसे P point है तो हमने इस पे देखिए perpendicular drop किया on the x-axis. So if the coordinates of P1 P is x1, y1, so abscissa becomes x1 and ordinate becomes y1. The distance from the x-axis becomes y1 or distance from the y-axis becomes x1. In the similar way, the coordinates of point Q is x2, y2. तो अगर मैं यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं तो इसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगी y एक्सिस से वो x2, y एक्सिस से डिस्टेंस x2 और x एक्सिस से डिस्टेंस y2. ये रहे हमारे पास. ये x एक्सिस पे जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करके आए दिस इज x2 और ये हमारे पास y2. If we drop another perpendicular from the point P on this line Q, suppose this is say P नहीं A, तो QA जो हमारे पास है यहाँ पे एक पॉइंट हमें N मिला. If we have to calculate the distance Pn, how can we calculate the distance Pn? If this one is x2 and this is x1, this becomes x2 minus x1. And the similar way, if we have to calculate the vertical distance between the Qn, so this is y2, the whole distance is given to you y2 and this is n से जो है ये axis के लिए y1. So this becomes y2 minus y1. Now going to apply Pythagoras theorem in this right triangle. Right triangle because all the coordinates have contained angle 90 degree. So angle n is also 90 degree because these lines are parallel. So d square, if pq square or d square becomes x2 minus x1 whole square or y2 minus y1 whole square. It doesn't matter कि आपने p के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लीजिए और q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लीजिए. तो यहाँ पे जो रहेगा आपके पास वो x1 minus x2 whole square या y1 minus y2 whole square. Distance does not depends on the नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन. ये स्क्वायर्स हैं तो ये हमेशा एक पॉजिटिव यूनिट ही आएगी. नेक्स्ट, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स. इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स 4,3 एंड 2,1, तो जस्ट राइट बिलो द 4 और 3 इनके नीचे आप लिख लीजिए दिस इज x1 और ये y1. ये कभी x1 x2 नहीं होते. दिस इज x1 और दिस इज y1 एंड x2 y2. तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करना है, यानी x में से x सब्ट्रैक्ट होगा और y में से y सब्ट्रैक्ट होगा. तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज 4 और 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर अगेन 4. तो 4 plus 4 becomes 8. The answer is under root of 8, that is 2 root 2 units, because these are the distance. We have to write the distance in terms of units. If we have to calculate the distance from the origin, distance from the origin of the particular point is defined by, if we take the first point is x comma y or 2 comma 3 minus 5 comma 8, the second point will be always 0 comma 0. The formula becomes
under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square in the place of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square, because जो origin के coordinate हमारे पास रहेंगे वो क्या रहेंगे 0, 0. So now the formula becomes under root x square plus y square. Suppose the point is given to you minus 3, 4, or in the question it is asked to us find the distance of the point minus 3, 4 from the origin. So it is directly under root of minus 3 square plus 4 square. So minus 3 square becomes 9 and 4 square becomes 16. So 9 plus 16 becomes 25 and 20 square of 25 is 5 units. This is find the distance of the point from origin. Origin से हमें फॉर्मूला सीधे अप्लाई करना है. आप इसको इस तरह से भी इम्प्लीमेंट करके लिख सकते हैं x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. This becomes under root of 2 square plus 3 square. 2 square is 4 and 3 square is 9. 9 plus 4 is 13 units. We have always marked the units. Now distance की applications हमारे पास सबसे ज़्यादा आती हैं कि like how to can we prove that the given triangle is isosceles triangle. तो triangle में हमें तीनों points के साथ जो है distance maintain करनी है कि तीनों point की distance हम calculate करें और उसके बाद उसमें distance formula लगा के AB भी calculate करें, BC भी calculate करें, CA भी calculate करें, because triangle contain 3 sides. If the two of the sides of the triangle are equal, then it is isosceles triangle. If all 3 sides are equal, then it's isosceles. And some other application of the distance formula is like how can we prove the given quadrilateral is parallelogram, the given quadrilateral is rectangle, the given quadrilateral is rhombus. Let's discuss. If question is asked to us ki now prove that ki given quadrilateral is parallelogram, the 4 vertices A, B, C and D, we have to calculate all 4 sides AB, BC, CD and DA. All the corresponding sides should be equal. Parallel sides, if this given figure is parallelogram, the opposite sides should be equal, and diagonals अगर आप निकालोगे AC and BD, they are not equal to each other. But in the similar way, if it is asked in the rectangle, तो opposite sides equal आएंगे and diagonals are also equal. तो यहाँ पे आपको side property and diagonal property दोनों apply करनी है. A parallelogram, if opposite sides are equal, the rectangle opposite sides and diagonals are equal. इसमें diagonals show करने होते हैं, parallelogram की not equal है. A rhombus, if all the sides are equal, rhombus and squares in both the geometrical figures, all 4 sides are equal. But in the rhombus, diagonals are not equal, and the squares, the diagonals are equal. The basic difference between parallelogram and rectangle is diagonal property. All the properties are similar, but in the parallelogram diagonals are not equal. In the similar way, rhombus में भी आपके diagonal बराबर नहीं होते हैं. All the 4 sides are equal. इसमें 4 sides भी equal होंगी आपकी और diagonal भी equal होंगे. Now let's continue with the exercise 7.1. The first question is asked to you. Find the distance between the points 2, 3 and 4, 1. Here, as we know, x1, the value of x1 is 2, the value of y1 is 3. We have to write here x1 is 2 and y1 is 3, and x2 is 4 and y2 is 1. Again, write the distance formula with the required distances under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. The value of x2 is 4 minus 2 whole square, that is 2 square, and 1 minus 3, which we have earlier discussed. So ये 2 square plus 2 square 4 plus 4 under root 8, that is 2 root 2 units. In the similar way, आपके पास जो भी आएंगे A और B में क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो A और B में एक हमारे पास जैसे x1 है तो A, y1 B है, x2 की वैल्यू है minus A and y2 is minus B. Again we applied the formula x2 फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, बीच में पॉजिटिव साइन नहीं आएगा. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. यहाँ पे स्क्वायर्स होते हैं और एडिशन होता है. सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो होती है आप जो करते हो वो बीच में फॉर्मूले में अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस एडजस्ट कर लेते हो. तो आपके पास माइनस ए ऑफ माइनस ए, माइनस ए वैल्यू ऑफ x2 इज माइनस ए एंड x1 ऑलरेडी इज पॉजिटिव, तो अगेन माइनस ए ऑफ माइनस ए, दैट इज minus 2a whole square becomes always positive 4a square. This is a square quantity, so
it comes always positive. So y2 minus y1 whole square, similar way में minus b of minus b, that is minus 2b whole square, that is 4b square. We have taken the 4 as common term, 4 आप बाहर निकाल लोगे तो अंडर रूट के अंदर बचा आपके पास a square plus b square, तो 2 under root a square plus b square units. The next question is asked to us, find the distance between the point 0 0. Again this is origin, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट d equals to under root x square plus y square अप्लाई कर सकते हैं. Find the distance between the point 0 0 and 36 15. The quantities are very large but it is very simple. Can you find the distance between the term of the a and b discussed in the section 7.2 of the NCERT book? इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको डिस्टेंस बताना है ये PQ. तो आपके पास PQ के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर उसी फॉर्मेट में हम रखेंगे. फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. तो 36 स्क्वायर विच इज 1296 एंड 15 स्क्वायर 225. ऐड करने पे आपका 121521. दिस इज स्क्वायर ऑफ 39. ठीक है. सेकेंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. डिस्टेंस किलोमीटर्स के निकालनी है 36 और ये 19. तो यही सेकेंड पार्ट है इसका कि इसमें हमें किलोमीटर्स में बस करना है. ये यूनिट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे एज ए किलोमीटर. अगेन द वैल्यू ऑफ x2 इज रिमेन सेम 36 एंड y2 इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज 0 एंड वैल्यू ऑफ x2 y1 इज अगेन 0. तो दिस इज 15 and 16. Here we apply Pythagoras theorem. Again we get the answer is 39 kilometer. The next question, determine the points collinear. कोलिनियरिटी की कंडीशन हमारे पास क्या होती है? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. 2 लाइन का सेगमेंट का सम हमेशा तीसरे सेगमेंट के इक्वल आना चाहिए. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी. द फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकेंड पॉइंट इज बी, थर्ड पॉइंट इज सी. तो ए बी भी कैलकुलेट करेंगे, बी सी भी कैलकुलेट करेंगे, सी ए भी कैलकुलेट करेंगे. लाइक ए बी इज बिकम्स √5, बी सी इज अंडर रूट 212 एंड ए सी इज अंडर रूट 265. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है किसी भी दो का सम तीसरा लाइन सेगमेंट नहीं है. तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. आइदर ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी डज नॉट इक्वल्स टू ए बी और बी सी प्लस ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी. सपोज इस कम्स ये 5 आ जाता, ये 2 आ जाता, तो आप लिख देते और ये 7 आ जाता. 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 है. इफ तो ये ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट. This question we have discussed earlier. Check whether the points are the vertices of this triangle are isosceles triangle. What is the property of isosceles? Some two sides of the triangle should be equal. So first point, let us be A, that is 5 comma minus 2, B 6 comma 4 and C 7 comma minus 2. First we are going to calculate the distance AB, A to B. This is x1, this is y1, this is x2 and y2. आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 आप लेट कर सकते हैं. तो आप a b निकालेंगे बाय द फॉर्मूला. इसको आपको सबको फॉर्मूला लिखना नेसेसरी है. सेकेंड डिस्टेंस BC, B के लिए अब 6,4 आपके लिए x1 y1 हो जाएगा और 7, minus 2 जो होगा वो x2 y2 हो जाएगा. अगेन वी हैव गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस BC. दिस इज माय अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स. AB इज 37 यूनिट्स एंड BC इज अगेन अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स. तो ये तो हमारे पास यहीं से आइसोसेलेस आ गया. बट इट कैन बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर तीसरा डिस्टेंस में हमारे पास बराबर आ जाएगा तो आइसोसेलेस नहीं रहेगा. तो हमें क्वेश्चन को यहीं जजमेंट करके नहीं छोड़ना है, हमें तीसरा डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि जो चेक वेदर है, क्योंकि बिकॉज ये हमें चेकिंग वर्क है तो आपको केवल 2 ही आंसर नहीं करना है. थर्ड डिस्टेंस CA, either this is x1 y1 or this is x2 y2. आप कैलकुलेट करके निकालेंगे. दिस इज 2. नाउ वी गेट कि AB equals to BC, therefore does not equals to AC. So this is triangle is isosceles. In somehow the question is asked, this is isosceles right angle. ये बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है कि चेक दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल. इसको कैसे करना है हम लोगों को कि सबसे पहले आइसोसेलेस के लिए हम लोग जो वर्किंग करते हैं ए बी बी सी सी में कोई भी एक साइड जो 2 साइड्स जो होंगी हमारे पास इक्वल आ जाएंगी. नाउ उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करनी है. जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर और रेस्ट 2 साइड्स का स्क्वायर का सम अगर इक्वल आता है, पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, तो ट्रायंगल राइट एंगल होगा. तो क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें उसमें 2 वर्किंग करनी है. एक आइसोसेलेस के लिए भी 3 स्टेप डिस्टेंस निकाल करके वर्किंग दिखानी है और एक बार पाइथागोरस भी अप्लाई करनी है.